Mr. Ketan Balakrishna Patil, Miss Neha S. Junare, Mr. Jamandeep Singh, Miss Purni Mahendru, Mr. Keshav Kumar, retired IPS, former Director, Anti-Corruption Bureau, Government of Gujarat. Miss Sonam Sanger, Honorable Sir, I present before you one candidate for award of degree in Doctor of Laws and 12 candidates for award of degree in Doctor in Philosophy and Integrity of Forensic Science, Behavioral Forensic, Cyber Security and Digital Forensics, Management Studies, Pharmacy, Police Science and Security Studies, Law, Forensic Justice and Police Studies, Engineering and Technology, and Medical Legal Studies. May I now request Honorable Vice Chancellor, Padma Shri Awardee Dr. J. M. Vyas to confer the degrees. Sir, please. To me by the Board of Governors, by the Vice Chancellor of this University, I confer on you the Doctor of Laws and Doctor of Philosophy degree in the Faculty of Forensic Science, Behavioral Science, Cyber Security and Digital Forensics, Management Studies, Pharmacy, Police Science and Security Studies, Law, Forensic Justice and Policy Studies, Engineering and Technology, and Medical Legal Studies, and for which you have been found qualified, and I charge you that ever in your life, by word and by deed, you will prove yourselves worthy of it. I also admit the other candidates otherwise found qualified for the same degrees in absence. Thank you, sir. May I now request Professor Dr. Satish Kumar, Dean School of Forensic Science, to further the convocation proceeding. Candidates for graduate, postgraduate degrees and diploma in forensic science, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 509 candidates of BSc Forensic Science, MSc Forensic Science, MSc Multimedia Forensics, MSc Forensic Biotechnology and postgraduate diploma in DNA Forensic, Fingerprint Science, Crime Scene Management, Crime Scene Photography, Forensic Document Examination, Forensic Ballistic, Forensic Journalism and Professional Degree in Crime Forensic under the School of Forensic Science who have been examined and found qualified for the said degrees and diploma. I request you to confer the said degrees and diploma on them. I also request to confer the said degree and diplomas on the candidates who are permitted to receive the degree in excellency. May I now request Professor Dr. Ashish Srivastava, Dean School of Behavioral Forensics, to further the convocation proceedings. Candidate for postgraduate degrees and diplomas in behavioral forensic, please rise and remain standing. Honorable Sir,
I present before you 279 candidates for postgraduate degrees in MPhil in clinical psychology, MA criminology with specialization in forensic psychology, MA criminology, MPhil in clinical psychology, MSc neuropsychology, MSc clinical psychology, MSc forensic psychology, MA criminology with specialization in forensic psychology, and postgraduate diploma in investigating psychology, cyber psychology under the School of Clinical Forensic, who have been examined and found qualified for the SAT degrees and diplomas. And I request you to confer the SAT degrees and diplomas on them. I also request you to confer the SAT degrees and diplomas on the candidate who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Professor Dr. Naveen Kumar Chaudhary, Dean School of Cybersecurity and Digital Forensics, to further the convocation proceedings. Candidates for postgraduate degrees in cybersecurity and digital forensics, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 269 candidates for postgraduate degrees in MTech Cybersecurity, MSc Digital Forensics and Information Security, MSc Cybersecurity, and postgraduate diplomas in Cybercrime Investigation, Cybersecurity, Semiconductor Security and Forensics under the School of Cybersecurity and Digital Forensics, who have been examined and found qualified for the SAT degree, and I request you to confer the SAT degree on them. I also request you to confer the SAT degree on the candidates who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Professor Dr. S.O. Chunali, School of Management Studies, to further the convocation proceedings. Candidates for graduate and postgraduate degrees in management, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 129 candidates for graduate and postgraduate degrees in Bachelor of Business Administration, MBA Forensic Accounting and Fraud Investigation, MBA Cyber Security Management, MBA Business Intelligence, MBA Healthcare and Hospital Management. Under the School of Management Studies, we have been examined and found qualified for the said degrees and diplomas. And I request you to confer the said degrees and diplomas on them. I also request you to confer the said degrees and diplomas on the candidates who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Professor Dr. Manjunath Bhate, Dean School of Pharmacy, to further the convocation proceedings. Candidates for the postgraduate degrees and diplomas in pharmacy, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 76 candidates for the postgraduate degrees in MSc Environmental Science, specialization in Environmental Forensic, MSc Chemistry, specialization in Forensic Analytical Chemistry, M.Pharm in Forensic Pharmacy, M.Pharm in Pharmaceutical Quality Assurance, MSc in Pharmaceutical Chemistry, and postgraduate diploma in Industrial Safety, Hygiene and Environmental Management under the School of Pharmacy, who have been examined and found qualified for the said degrees, and I request you to confer the said degrees to them. Also, I request you to confer the said degrees to the candidates who are permitted to remain present in absentia. May I now request Professor Dr. Akshat Mehta, Dean School of Police Science and Studies, to further the convocation proceedings.
Candidates for postgraduate degrees and diploma in police science and security studies, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 88 candidates for postgraduate degrees in MSc Homeland Security, MA Police and Security Studies, and postgraduate diploma in Security Studies under the School of Police Science and Security Studies, who have been examined and found qualified for the said degrees and diplomas, and I request you to confer the said degrees and diplomas on them. I also request you to confer the said degrees and diplomas on the candidates who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Professor Dr. Purvi Pokhriyal, Dean School of Law, Forensic Justice and Policy Studies to further the convocation proceedings. Candidates for postgraduate degrees and diploma in law, forensic justice and policy studies, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 78 candidates for postgraduate degrees in LLB Honours, LLM in Cyber Law and Cybercrime Investigation, LLM in Criminal Law and Criminal Justice Administration, postgraduate diploma in Drug and Substance Abuse Laws, Cyber Law, under the School of Forensic Justice, Law and Policy Studies, who have been examined and found qualified for the same degrees. And I request you to confer the same degrees and diplomas on them. I also request you to confer the same degrees and diplomas on the candidates who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Professor Dr. P. Mehdi, Dean School of Engineering and Technology, to further the convocation proceedings. Candidates for postgraduate degrees in engineering and technology, please rise and remain standing. Honorable Chair, I present before you 59 candidates for postgraduate degrees in MSc Nanotechnology with specialization in forensic nanotechnology, MSc Food Technology with specialization in forensic food analysis, and MTech Civil Engineering with specialization in forensic structural engineering under the School of Engineering and Technology, who have been examined and found qualified for the said degrees. And I request you to confer the said degrees on them. I also request you to confer the said degrees on the candidates who are permitted to receive the same in absence. May I now request Professor Dr. G. Rajesh Babu, Dean School of Medical Legal Studies, to further the convocation proceedings. Candidates for postgraduate degrees and diploma in medical legal studies, please rise and remain standing. Honorable Sir, I present before you 62 candidates for postgraduate degrees in MSc Toxicology, MSc Forensic Nursing, MSc Forensic Dentistry, postgraduate diploma in professional diploma in forensic archaeology under the School of Medical Legal Studies, who have been examined and found qualified for the said degrees and diplomas. I request you to confer the said degrees and diplomas on them. I also request you to confer the said degrees and diplomas on the candidates who are permitted to receive the same in absentia. May I now request Honorable Vice Chancellor Padma Shri Awardee Dr. J. Vyas to confer the degrees. By the authority given to me by the Board of Governors as the Vice Chancellor of this University, I confer on you the graduate, postgraduate degrees and diplomas in the field of forensic science, behavioral forensics, cyber security and digital forensics, management studies, pharmacy, police science and security studies, law, forensic justice and policy studies, engineering and technology, and medical legal studies, for which
You have been found qualified, and I charge you that never in your life, by word and deed, you will prove yourselves worthy of it. I also admit the other candidates otherwise found qualified for the same degrees in absentia. Thank you, sir. Students may go down and please be seated. May I request the C.D. Jadeja, Executive Registrar, National Forensic Sciences University, to present the register to Honorable Vice Chancellor, Padma Shri Awardee, Dr. J.M. Vyas, for his signature. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Now the degrees are officially conferred. Thank you, sir. हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज गौरवशील गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं। जन सामान्य के लिए सर्व समाविष्ट विकास के लिए संकल्पबद्ध गतिशील गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करें। सर, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, मेरे साथी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, कुलपति श्री डॉक्टर जे.एम. व्यास, देश विदेश से पधारे हुए विविध क्षेत्र के महानुभाव, उपस्थित अधिकारीगण, विद्यार्थी एवं प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्वाण दिन पर उनकी दिव्य चेतना को मैं नमन करता हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आदरणीय मोदी जी ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विचार, उससे निपटने की तैयारी समय से पहले ही कर लेते हैं। यह उन्हीं का विचार था कि न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए ऐसे संस्थान खोले जाए जिससे हमारे युवाओं को नए अवसर मिले। हमारे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2008 में इस संस्थान को शुरू किया था। अपनी कई विशेष उपलब्धियों की वजह से आज यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है और देश के 7 राज्यों के साथ युगांडा में भी इसका एक परिसर काम कर रहा है। इस संस्थान की लोकप्रियता और उपयोगिता दिनों दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं और राज्य सरकारों ने इस संस्थान के साथ लगभग 147 MOU किए हैं। ज्ञान के माध्यम से ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता मिलती है जो मनुष्य के जीवन में पूर्णता की ओर ले जाती है। इस ध्येय मंत्र के साथ यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र सौभाग्यशाली हैं
यह संस्थान सिर्फ पाठ्यक्रम की पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। आज इस विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में यहाँ से स्नातक, अनुस्नातक और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले 1565 छात्रों को मैं विशेष अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए यह भी बड़ी सम्मान की बात है कि यहाँ से 76 विदेशी छात्रों को भी डिग्री मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम भारत की आजादी के अमृत काल के इस सफर में अनेक बदलावों के साक्षी बने हैं। आजादी के बाद देश में पहली बार दंड नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई के नेतृत्व में इन तीनों कानून को भारतीय परिवेश के अनुसार हमारे लोगों को समय पर न्याय मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। पुलिस, न्यायालय विज्ञान और न्यायपालिका तीनों ही न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग बन गए हैं। इसीलिए न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र के दीक्षित छात्र के रूप में आपके पास आजादी के इस अमृत काल में राष्ट्र सेवा में योगदान देने के असीम अवसर है। बदलते समय के साथ जब अपराधों को छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस स्थिति में अपराधियों को पकड़ने और न्यायालय में अपराध को साबित करने में न्यायालयिक विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र अपनी प्रतिभा और योग्यता से न्याय प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाएंगे। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार में भी अग्रणी है। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि इस विश्वविद्यालय के 83 देशों को क्षमता निर्माण में मदद की है। शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त करने का काम भी विश्वविद्यालय कर रहा है। यहाँ मादक पदार्थ और ड्रग्स के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह संस्थान राष्ट्र सेवा के उद्देश्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और यहाँ होने वाली युवा राष्ट्र शक्ति राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होगी, ये मेरा विश्वास है। आज जब हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अधिक सुरक्षित भारत का भी विकास हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ के सभी छात्र कानून व्यवस्था के विषय में से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आप हृदय में राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनेगा। एक बार फिर आप सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गणेश। माननीय, आपके सद्भावपूर्ण शब्दों के लिए हार्दिक आभार। अपार हर्ष के साथ में विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी से कि वे मंच पे सभा को संबोधित करें और उन्हें प्रेरित करें। सर, भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात के गृह मंत्री आदरणीय श्री हर्ष भाई संघवी जी, कुलपति राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर J.M. व्यास जी, देश विदेश से पधारे सभी अतिथिगण,
अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं, महानुभाव, देवी और सज्जन, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस मिशन को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज यह यूनिवर्सिटी अपने उन उद्देश्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरे से पहले पद्मश्री डॉक्टर जे.एम. व्यास जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। आज यह यूनिवर्सिटी आने वाले